Hello students, welcome to this platform of Engineering Institutes of India. I am Sandeep Kumar Gupta, your mathematics educator. We are going to discuss today about your engineering mathematics part. We will discuss two things. First thing, why mathematics is important for GATE. And second thing is that what strategy we should follow so that we can score maximum marks in engineering mathematics part. So I come to the first point. What is the importance of engineering mathematics in GATE? Why it is so important in GATE? So there are many reasons. Uh, First reason is that all of you know it is the single subject that covers highest weightage in GATE. It covers 15 marks. Question of 15 marks comes in GATE from engineering mathematics. It is a single subject that covers 15 marks. And you will see apart from this subject, each subject weightage is maximum 8 to 9 marks. And there are only 6 chapters in mathematics. So you can see from 6 chapters you are covering 15 marks only. Okay, so we will see syllabus of mathematics. And second thing is that why it is important, you can not only you will score in engineering mathematics part, but also this subject is very important to solve questions of other subjects like thermodynamics, heat transfer, fluid mechanics, process calculation, like this. Until unless your your basic fundamental basic of mathematics will not be strong, you cannot attempt questions from fluid mechanics. Like when you will study kinematic part of fluid mechanics, so you should have knowledge about curl, divergence, like this. Okay, vector calculus. When you will solve the questions from Bernoulli equations, so you should have knowledge of partial differential equations. Same when you will solve the questions of heat transfers, so you should have knowledge of partial differential equations. Okay, so if your mathematics part is strong, so you can attempt other subjects question easily. One more important thing is that if your mathematics is strong, you can solve aptitude questions easily. Okay, so this is the only subject that covers 15 purely engineering mathematics marks. Apart from 15 marks, many questions of technical subjects you can easily attempt. Okay, so that's why mathematics is very important subject to score highest marks in GATE. Okay, now second point, what so first I discussed syllabus of engineering mathematics in GATE. Okay, so there are total 6 chapters in engineering mathematics: linear algebra, calculus, differential इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, न्यूमेरिकल मेथड्स. ओके, तो आप देख रहे हैं 6 चैप्टर हैं और 6 चैप्टर में से आपके 15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर. ठीक है ना, तो ऑन एवरेज वन चैप्टर कवर्स on average 2.5 marks. Okay, it is the average of one chapter. Okay, now come to the what strategy should be followed so that you can achieve maximum marks in GATE. Okay, so to achieve maximum marks in GATE, most important thing is that first thing is that you should have basic knowledge of mathematics, or your basic concept of mathematics should be strong. Your fundamental of mathematics should be strong. From since 2-3 years, trends has been changed. Your focus should be on understanding the concepts of mathematics, not memorizing the formula, because from last 2-3 years, questions were asked from the conceptual parts, not only from formulas. Okay, so you should have focus on understanding the concepts of engineering mathematics. So what is the difference between mathematics and engineering mathematics? In mathematics, we generally memorize formulas and solve the questions, but in engineering mathematics, we should know about the application part of mathematics. तो आप देखेंगे पिछले 2-3 साल में कि जो मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन पार्ट है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक, तो आपको सिर्फ फॉर्मूले रटने नहीं है, फॉर्मूले याद नहीं करने. आपको क्या करना है, आप
आपको फंडामेंटल पता होना चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये अगर आपका फॉर्मूला आया है तो कहाँ से आया है, ठीक है। ये सब चीजें आपकी क्लियर होंगी तभी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। So this is the first important thing to score maximum marks. Okay. Now second thing is that you should no, GATE is there are two types of work. One is hard work and second is smart work. So for achieving good score, you should do smart work rather than hard work. Okay. GATE is like 2020 cricket match. In 2020 match, you should be स्मार्ट। ओके, वहां आपको क्या होता है, स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है, ना कि हार्ड वर्क की जरूरत होती है। अब स्मार्ट वर्क क्या होता है, स्मार्ट वर्क कैसे करना होगा हमें, कि देयर इज वन वेरी फेमस रूल दैट इज 80-20 Pareto rule. What this rule says? It says it is applicable in each aspects of life. Okay, ये क्या कहता है, इट सेज इफ वी टॉक अबाउट द रिगार्डिंग गेट। ओके, ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो आपके 80% क्वेश्चंस हैं, 80% क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम 20% सिलेबस ओनली। जो आपके 80% क्वेश्चंस आते हैं गेट में, वो सिर्फ और सिर्फ आपके 20% सिलेबस से आते हैं। और यही हमें स्मार्ट वर्क करना है। हमें क्या करना है, हमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको एनालाइज करना है और वहां से देखना है कि जो ज्यादातर मोस्टली क्वेश्चंस हैं वो किस पार्ट से पूछे जाते हैं। तो ये क्या कहता है कि 80% क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम 20% सिलेबस एंड 20% क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम 80% सिलेबस। ओके, तो आपको ज्यादातर किस पर फोकस करना है, 80% क्वेश्चन जो आते हैं, यानी 20% सिलेबस पर आपको फोकस करना होगा। यही स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है गेट को क्वालिफाई करने के लिए। बजाय आप देखो जो 80% सिलेबस है, जहां से 20% क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप वहां फोकस करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हार्ड टाइम देना होगा। तो इसलिए क्या होता है कि जो आप जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है, वहां क्या होता है, पूरा एनालाइज किया जाता है और वहां पर जो जिस पार्ट से ज्यादा वेटेज होता है, जो पार्ट ज्यादा आता है, जहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक, अब if I talk about mathematics syllabus, so you will see questions from calculus. The weightage of calculus remains maximum in GATE papers. If you will analyze this year question paper, only this year question papers, you will see from only this single chapter you will find 8 marks question. अगर आप देखोगे इस साल का पेपर एनालाइज करोगे तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस पार्ट से आया है। क्लियर? तो यही आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। आपको देखना है किस पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उस पार्ट पर ज्यादा फोकस करना है। कैलकुलस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि जो आपका अदर सब्जेक्ट्स में यूज होगा वो आपका कैलकुलस पार्ट ही ज्यादा यूज होता है, वेदर इट इज डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस लाइक दिस। ओके, तो कैलकुलस पार्ट गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से आप देखेंगे, अगर देखो हम एनालाइज करते हैं तो देखो, अगर इफ यू विल एनालिसिस ऑफ 24 गेट क्वेश्चन पेपर, देखो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम कैलकुलस, दिस इज द पार्ट ऑफ कैलकुलस। ओके, इट इज ऑफ 1 मार्क्स, तो 1 मार्क्स फ्रॉम हेयर। This is the second question, velocity field in an incompressible flow. This question is from fluid mechanics, but यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो क्या लगेगा, आपका मैथ का कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ विल अप्लाई हेयर। क्वेश्चन इज फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, तो बताया था ना आपका कि मैथमेटिक्स पार्ट आपका हर जगह अप्लाई होगा ना। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, सो 2 क्वेश्चंस फ्रॉम कैलकुलस। थर्ड क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू एरिया अंडर कर्व, है ना, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एरिया अंडर कर्व। जो आपका एरिया अंडर कर्व होता है वहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ये पोलर फॉर्म में पूछा गया है। जनरली कार्टेशियन में आता था, इस बार आपका पोलर फॉर्म से पूछा गया। दिस इज 2 मार्क्स क्वेश्चन। सो हाउ मेनी मार्क, 1, 1, 2 and 2, 4. Another question this year, this is also from calculus, this is from line integration, this is part of the calculus part. Okay, this comes from vector calculus. Okay, so this question of 2 marks, total 6 marks. This is another question this year, 2 marks of questions. This is from directional derivatives,
It is the part of the vector calculus. So you are seeing here how many marks? 8 marks only from calculus chapter. Calculus chapter से आपका कितना 8 मार्क्स से क्वेश्चन आए दिस ईयर्स. सो आपको यही स्मार्ट वर्क दिखाना है ना. अच्छा, और प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करते हैं. प्रीवियस ईयर 2023 का एनालिसिस जब करते हैं, दिस क्वेश्चन फ्रॉम कैलकुलस, ओके 1 मार्क्स. दिस क्वेश्चन अगेन फ्रॉम कैलकुलस डाइवर्जेंस पार्ट, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स. अनदर क्वेश्चन, this is also from 1 mark question, okay, 3 marks. 2 marks question for calculation, 5 marks. In 2023 total 5 marks questions came from calculus only. एक सिंगल चैप्टर से 5 मार्क्स भी बहुत होते हैं, है ना. इस बार तो 8 मार्क्स से आए थे. नाउ कम टू द 2022 क्वेश्चंस. दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम एप्टीट्यूड पार्ट. ये आपका एप्टीट्यूड का था, इसमें मिनिमम मैक्सिमाइज करना था. तो दिस इज आल्सो रिलेटेड टू कैलकुलस. इन कैलकुलस वी विल स्टडी मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शंस, ओके. सो दिस इज रिलेटेड टू कैलकुलस पार्ट, 1 मार्क्स क्वेश्चन. अनदर क्वेश्चंस फ्रॉम कैलकुलस डिफरेंशियल, ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन, 2 मार्क्स. द वैल्यू ऑफ द रियल वेरिएबल विच मैक्सिमाइज, अगेन मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन, 3 मार्क्स क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 marks, directional derivatives. You have seen in 2024 one question from directional derivatives and one question in 2022 from directional derivatives. So आप देख रहे हो directional derivatives का कितना इंपॉर्टेंस है. बैक टू बैक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव से. इट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी मार्क क्वेश्चन? 6, सॉरी 2, 3, 4 and 5. Okay, till now we have seen 5 mark question from only calculus. Another question from calculus, another question from calculus, 2 marks question. So how many marks came from this single chapter? 7 marks question. आपके सिंगल चैप्टर से 7 मार्क्स कवर किए गए हैं. सो यू कैन अंडरस्टैंड द स्मार्ट वर्क, ओके. आप स्मार्ट वर्क कैसे करना है, आपका एक ही चैप्टर से 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए. तो आप देख सकते हैं कैलकुलस पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है. अगर आप इफ यू टॉक अबाउट पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ कैलकुलस पार्ट्स, सो विच टॉपिक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कैलकुलस, यू विल सी ओनली दिस पार्ट. विच पार्ट? कैलकुलस. Only from this part, gradient, divergence and curl. This is the part of vector calculus. So vector calculus is very important point of view of GATE exam, okay. आप देख रहे हो इसमें ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल आपको दिखाया था ना. हर ईयर में डाइवर्जेंस जो आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव था, इट इज द पार्ट ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल. यहां से यू विल सी एवरी ईयर एट लीस्ट 1 क्वेश्चन. आपको एक क्वेश्चन हर साल आपको मिलेगा ही मिलेगा यहां से. तो आपको इस वाले टॉपिक पे क्या करना है, ज्यादा फोकस करना है. वेक्टर आइडेंटिटीज, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल्स, स्टोक्स, गॉस एंड ग्रीन्स थ्योरम, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ वेक्टर कैलकुलस. इस साल आपको दिखाया 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे ना. तो इसलिए 4 मार्क्स फ्रॉम ओनली वेक्टर कैलकुलस एंड फ्रॉम कैलकुलस 8 मार्क्स. सो हाउ इंपॉर्टेंट this is, okay. So today we will discuss some topics, important topics of mathematics. So our important topics are gradient, divergence and curl, okay. So we will discuss these 3 topics and we will solve some previous year questions from these topics, okay. So I have discussed what strategy you should follow to achieve maximum marks. So first, your fundamental, your concept of each topic should be clear, should be strong. Second, you have to do smart work. How you have to analysis of previous year question papers and you have to analyze which topics covers more weightage, okay. आपको वो सब देखना होगा. Not only in mathematics, in other subjects you have to do analysis like this. आप अदर सब्जेक्ट में भी ऐसे एनालाइज करना पड़ेगा किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. ये रूल आपको जो बताया ना 80-20 रूल, इट इज एप्लीकेबल इन everywhere, है ना. if you are doing BTech, you are in final year, so you will see in your semester exam, you will see 80% questions comes from 20% syllabus, okay. So you should have focus on that 20% part, okay, so you can achieve more marks. So you have
to solve previous year questions papers ना. And third strategy you should follow, prepare short notes. आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे साथ के साथ, जो भी आप पढ़ रहे हो उसके साथ साथ क्या करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ. बिकॉज एट द टाइम ऑफ एग्जाम, व्हेन, जब आपके पास में कम टाइम होगा तो आप सारा का सारा सिलेबस रिवाइज नहीं कर सकते. तो आपको क्या होगा, शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास होंगे, इफ यू हैव शॉर्ट नोट्स, तो यू कैन रिवाइज शॉर्टली. ओके, आप जल्दी जल्दी क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं. तो शॉर्ट नोट्स बहुत काम आते हैं. आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, साथ के साथ बनाने जाना है. तो ये दे आर 3 पॉइंट्स टू स्कोर high maximum marks in mathematics. Okay, now come to the now we are going to discuss important topics, that was the gradient, curl and divergence. So these topics are related to vector calculus. So firstly we should know what is the vector. So you know there are two types of quantities. One is scalar and second is vector. What are the vector quantities? Vector quantities are those quantities that requires डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, जिसको आपको क्या है, डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है. स्केलर में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. जैसे स्केलर में आपका क्या कहता है, टेम्परेचर. ठीक है, तो टेम्परेचर के लिए सिर्फ क्या है, आपको मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. फॉर वेक्टर यू शुड हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड. एग्जाम्पल, फोर्स, वेलोसिटी, acceleration like this, these all are the vector quantities. And how we represent vector, vector को कैसे represent करते हैं, suppose AB is a vector, so we can represent like this, x2 minus x1i, y2 minus y1j, z2 minus z1k. Suppose AB vector is like this. This is A, this is B, and coordinate of A is x1, y1 and z1, and coordinate of B is x2, y2 and z2. These are the coordinate of A and B. So we can write AB vector x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 j cap, k cap. What are I, j, k? I, j, k are the unit vectors in x, y, z direction. Okay. Now there is one term, position vector. Position vector means suppose there is a point, this is A, and coordinate of A is x, y and z. If we are drawing a vector from origin, this is origin OA, so what will be OA? OA will be xi plus yj plus zk. This is known as position vector. xi plus yj plus zk. This is a vector known as position vector. Now what will be the magnitude of this vector? We find magnitude like this, under root x square plus y square plus z square. Magnitude of this position vector will be scalar quantity. Okay, now if you want to find r cap means unit vector in the direction of r. Okay, so you will find like this, r vector divided by magnitude of r. Okay, it will be like this, xi plus yj plus zk upon under root x square plus y square plus z square. This will be the unit vector in the direction of r. So there are three important things. What is position vector? Xi plus yj plus zk, it is vector.
Okay, what is the magnitude of r? What is the magnitude of this position vector? This is the x square plus y square plus z square. It is a scalar quantity. It will come scalar. Okay, ये आपका क्या होगा, कुछ ना कुछ क्वांटिटी आएगी ना, लाइक दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ए, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस. तो इट विल बी लाइक दिस ना, 50 मीटर, 50 किलोमीटर, 10 मीटर, लाइक दिस. So it will be scalar. Okay, now what will the r cap? It is the unit vector, like this. The I, j, k are the unit vector in x direction. Similarly, this is the unit vector in the direction of r. Okay, so these three things should be in your mind. What is position vector, magnitude, and what is the unit vector in r direction. Okay, now come to so now when we analysis of vectors, so we can do three types of multiplication in vectors. हम वेक्टर्स में क्या तीन टाइप के मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट वन इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन. स्केलर मल्टीप्लिकेशन. सेकंड इज डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट. थर्ड वन इज क्रॉस प्रोडक्ट. You have done in 11th and 12th classes like this, na? Dot product and cross product. Dot product, what is dot product? A dot B equal to AB cos theta. AB cos theta. And what is scalar product? A cross B. A cross B. Okay, और ये क्या होता है आपका A B sin theta. और इसमें क्या होता है? It will be a vector quantity. Dot product of two vectors will be a scalar quantity. Okay, but when you will do cross product of two vectors, it will come vector quantity like this. Now how you will find a cross product? Like this, na, I by the determinant method, I j k. Now you will have the coefficient of a like this, na, a1 b1 c1, coefficient of b a2 b2 c2, like this, na. Then you will find cross product. It will come vector quantity. So dot product of two vector will be scalar, and cross product of two vectors will be vector quantity. Okay, now come to the scalar multiplication. What is scalar multiplication? If you are multiplying in vector with some scalar quantity. Okay, na, like this. Suppose k is scalar quantity. Now you are multiplying with some vector like this, na, xi plus yj plus zk. You are multiplying in vector with scalar quantity. So it will be just simple multiply like this, na, kxi plus kyj plus kzk, like this. Okay, ijk are the unit vectors in x, y, z direction. This is clear. So when we will talk about divergence, curl, gradient, so you should have basic knowledge of these three products: simple multiplication, scalar multiplication, dot product, and cross product. Okay, now we come to the three important terms, that is the gradient, curl, and divergence. Let's see these three terms. What three terms? Gradient, divergence, and curls are associated with these three multiplication. Okay, we have three types of multiplication, and we have three terms. So these three terms are associated with these three multiplication. So gradient is associated with scalar multiplication. Gradient is related to scalar multiplication. Gradient is related to scalar multiplication, and divergence is related to dot product. So you should remember like this: D for divergence and D for dot product. D for dot product and D for divergence. So divergence is related to dot product. And curl means C for curl and C for cross product. You can remember like this, na? C for curl and C for cross product. So curl is related to cross product. कर्ल आपका क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है. इफ यू विल रिमेंबर थिंक लाइक दिस बाय रिलेटिंग दिस, ना, लाइक दिस. सो यू विल
रिमेंबर फॉर लॉन्ग टर्म्स, आप क्या इन चीजों को लंबे टाइम तक याद रखोगे और आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपको। क्लियर? चलिए अब कैसे रिलेटेड होते हैं ये देखते हैं। ग्रेडियंट, तो एक देयर विल बी एट वन टर्म, दिस इज कॉल्ड डेल, this is called del. Sometimes it is also called nebula, nebula, and it is represented by like this. And what is this? This is the del upon del x I cap plus del upon del y j cap plus del upon del z k cap. This is a vector term. This is a vector term. What is del? This is a vector because ijk is there, so it will be vector quantity. Now come to the what is the gradient. Gradient क्या होगा आपका? देखो आपको बताया था gradient में क्या करते हैं, in gradient we multiply in vector by some scalar quantity. gradient में क्या करते हैं हम, एक वेक्टर में एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं. सेम विल बी इन ग्रेडियंट. ग्रेडियंट में क्या होगा, व्हाट विल बी इन ग्रेडियंट, वी विल मल्टीप्लाई विद सम स्केलर इनटू वेक्टर टर्म. ओके, सो हियर वी हैव डेल इज वेक्टर. जो हमारा डेल है वो क्या है, वेक्टर है. तो अब वेक्टर हमारे पास है, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई विद सम स्केलर क्वांटिटी. हमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना होगा. अब वो स्केलर आपका कुछ भी हो सकता है, वो स्केलर आपका क्या है, कुछ भी हो सकता है. एंड कीप इन माइंड वी विल रिप्रेजेंट स्केलर y small f and vector y capital F and vector by capital F like this. हम स्केलर होगा उसको स्मॉल एफ से. अभी आपको तो कुछ भी हो सकता है. स्केलर मीन्स लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0. दिस इज द स्केलर पार्ट. ओके, एंड व्हाट इज वेक्टर, यू नो वेक्टर वेरी वेल. इट विल बी लाइक दिस, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. दिस विल बी vector. Okay, so vector will be represented by capital F and scalar will be represented by small f. Okay, now come to the gradient. Gradient में क्या होगा, we will multiply in vector by some scalar. Okay, so what will be the gradient if we have to find gradient of some scalar like this, gradient of some scalar. So it will be multiplication in vector by scalar. Okay, and it will be, if you multiply in this, so it will come like del f upon del xi plus del f upon del yj plus del f upon del z. Similarly like simple multiplication or scalar multiplication. And what will be the output if you will find gradient of some scalar quantity, what will be the output, it will be a vector quantity. आपको बताया था जब हम किसी वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक वेक्टर मिलेगा. सो हियर दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी. ये आपकी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी. ओके, सो you have to remember when we will talk about gradient, so gradient will be of scalar quantity when we will multiply in vector by some scalar and output will be a vector quantity. Okay, हम किसका निकालेंगे ग्रेडियंट, एक स्केलर का निकालेंगे, डेल से मल्टीप्लाई करेंगे और जो निकल के आएगा वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका वेक्टर क्वांटिटी. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. अगर ये चीज आपने ध्यान रखी तो आपका क्या है, इजिली आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को. ओके, many students get confusion exam. What is in divergence, it is cross product or dot product. What is in curl, it is dot with or curl, cross product. Okay, so if you will remember like this, in divergence dot product, d for divergence, d for dot product, in curl, c for cross product. So you will never forget these things. Okay, now come to the divergence part. Okay, what is divergence? Divergence. So when we will talk about divergence, so it is related to your dot product. We will do dot product. Dot product हम किसका करते हैं? In dot product we take two vector quantity. Okay, we will do dot product of two vectors. So there should be two vectors. Okay, so we have one vector is del. We have one vector is del, and we should have
second vector like this f, like this. Okay, now suppose what is del? Del is del upon del xi plus del upon del yj plus del upon del zk. This is del. And suppose f is f1i plus f2j plus f3k. This is the f vector. This is the component of f in x y z direction. Okay, so when we will find dot product, so what will be the dot product? I dot I will be 1, so this will be del f1 upon del x. Okay, what will be the j dot j? J dot j will be 1, so it will be del f2 upon del y. What will be k dot k? It will be 1, so it will be del f3 upon del z. So आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? Here we have got scalar quantity. So divergence of any vector will be a scalar quantity. जो भी डाइवर्जेंस निकल के आएगा किसी वेक्टर का वो क्या होगा? आपका स्केलर क्वांटिटी होगा. ये चीज आपको माइंड में रखनी है. नाउ कम टू द थर्ड term, that is the curl. In curl, what we will do? We will do cross product. What will we do? Cross product like this. Curl. Now we will find curl. Curl is related to cross product. So in cross product, we do of cross product of two vector quantities, and we find the answer will be vector. Okay, कर्ल क्या होता है? आपका दो वेक्टर्स का होता है और होता भी क्या है? आपका वेक्टर निकल के आता है. सो इफ यू हैव टू फाइंड कर्ल, so we will represent like this. Curl will be cross product f. So how you will find? You will find by the determinant form I j k, and write down del upon del x, del upon del y, del upon del z, and what will be f? F1, f2 and f3. So by the determinant concept you will find the curl. So curl will be a vector quantity. So there are three important things. We will find gradient of a scalar quantity, and gradient of scalar quantity will be vector quantity. Okay, gradient जो होगा आपका वो क्या होगा? वेक्टर होगा. And divergence, we will find divergence of a vector quantity and it will be a scalar. Divergence of vector will be a scalar. And third one is curl. Curl of a vector will be a vector quantity. These three things should be in your mind always. Okay, अगर ये आपको क्लियर होगा तो you will be able to solve the question related to these three terms. Okay, these three terms are very very important: curl, divergence and gradient. Okay, so I hope these things you should have clear. Now come to the application part of gradient. Application of gradient. Application of gradient. As we have discussed, gradient will be of vector scalar quantity and it will be a vector. So suppose we have some scalar quantity like this: x square plus y square plus z square minus a square equal to 0. This is related to spherical surface. Okay, x square plus y square plus z square minus a square 0 is represent spherical surface. So surface will be a scalar. Okay, now we will find the gradient of this surface. What will be gradient? Gradient will be like this: del upon del x fi plus del f upon del yj plus del f upon del zk. Okay, now del f upon del x, what will be del f upon del x? You have to do partial differentiation of this with respect to x. So when we will do partial differential of this with respect to x, so other term will be constant, y and z will be constant. So what will be the
del f upon del x will be 2x, 2x, 2xi. What will be del f upon del y? 2yj. What will be del f upon del z? 2z, 2z. Okay, k cap. So this will be the gradient of this surface. Okay, and gradient of wave will be vector quantity. So you are seeing here, this is the vector. Okay, gradient जो होगा आपका वो क्या होगा? वेक्टर होगा. अब what it represent, ये आपका क्या represent करता है भाई? We have some surface and now we have some vector quantity. Gradient of surface is vector. So this gradient represent normal vector of any surface. Normal vector of any surface. Gradient represent normal vector of any surface. Suppose we have a sphere, x square plus y square plus z square. We have some surface. So what gradient of f will represent? It will represent a surface normal vector, a vector that is normal to surface. Now you will put value of x, y, z, so you can find the surface normal vector at any particular point. Suppose in question asked, find the surface normal vector, surface normal vector, surface normal vector at 1, 1, 1 of this scalar. Okay, of this surface. आपको इस surface का क्या find करना है? Normal vector find करना है. So how will you find? So first you will find gradient of f, then you will put the value of x, y, z. जिस भी पॉइंट पर आपको पूछ रहा है उसकी वैल्यू आपको रख देनी है. So put x, y, z here. So it will be like this: gradient of f at 1, 1, 1 will be 2i plus 2j plus 2k. So this represent normal vector to this surface at point 1, 1, 1. So like this you can find normal surface vector at any point, at any point. Many times question asked like this: unit surface normal vector, unit surface normal vector, unit surface normal vector. So earlier we have discussed what is the unit vector. What is the unit vector? Like this, na? R cap was the unit. So this will be r vector upon magnitude of r. So similarly, what will be the unit surface normal vector? It will be gradient of f upon magnitude of gradient of f. So you can find unit surface normal vector like this. आप इस तरीके से find कर सकते हो. Okay, many times asked in GATE unit surface normal vectors. आपको ये चीजें clear होनी चाहिए. Okay, now come to the another application of gradient. This was the first application to find the surface normal vector. Now second application. Second application is directional derivative. Directional derivatives. As we discussed, from directional derivatives, one question asked in this year 2024 and one question asked in 2022. Okay, back to back, है ना? So this directional derivative topic is very important. You will find frequently questions asked from this topics. Okay, so this is the very important topic. So what is directional derivatives? What is the physical meaning of directional derivatives? Okay, so directional derivatives means this represent the change in any scalar, rate of change. We can say rate of change in any scalar. अब scalar may be like temperature, okay, temperature or other things. Scalar at particular direction at particular point, directional derivative tells us
the rate of change of any scalar at in particular direction at some particular points. Okay, in some particular direction at some particular point. Okay, how, कैसे? So आपको बताया था अभी कि ग्रेडियंट एफ क्या होता है. व्हाट इज द ग्रेडियंट एफ? इट टेल्स अस surface normal vector. Okay, so if we are finding gradient of f, it will be del f upon del x I plus del f upon del y j plus del f upon del z k. Okay, this is the gradient. So यहाँ क्या होगा, अगर हमको वी हैव टू फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स. ओके, वी हैव टू फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, सो वी विल रिक्वायर्ड ए डायरेक्शन, है ना. वी विल रिक्वायर ए डायरेक्शन इन विच वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स. ओके, सो what it tells del f upon del x, it tells the rate of change of f in x direction. Del f upon del x tells the rate of change of f in x direction. Okay, what del f upon del y tells, ये आपको बताता है कि जो आपका स्केलर है वो y डायरेक्शन में किस रेट से चेंज हो रहा होगा. डेल एफ अपॉन डेल जेड बताता है कि जो आपका स्केलर है वो आपका z डायरेक्शन में कितने रेट से चेंज हो रहा होगा. फॉर एग्जांपल, सपोज यू हैव a rod, if you are hitting this, okay, so temperature will increase in all direction, x, y and z direction. So at what rate temperature will increase in particular direction, x direction, y direction and z direction? So it is the gradient of f. But we want to know what we want to know. We want to know at what rate temperature will increase or temperature will change, either it decrease or increase, at what rate it will change in some particular direction. Okay, so then we will require a direction. So suppose it is asking find the directional derivatives of some scalar quantity in ijk direction, in some particular direction. Okay, when question of directional derivative will come, so it will give a direction also. Okay, आपको डायरेक्शन भी देगा. तो आपको क्या करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड करना है. हाउ विल यू फाइंड डायरेक्शनल derivative of f in direction a, so you will find like this. It is represented like this, dd of f in a direction. Okay, so you will find gradient of f in a direction, in some particular direction. So you will do multiply of gradient f by the unit vector of that direction. So how will you find unit vector of a? You will find like this, a vector upon magnitude of a. Okay, so this will be the directional derivatives of f in a direction. Now if it is asking at some particular point, and at some particular point, so you will put the value of that point in this result. जो भी आपका आंसर आएगा उसमें क्या करोगे, you will put the value of x, y, z. So you will find directional derivatives of f at some particular point. Okay, it is clear. I hope it will be clear. So it is the second application of gradient. Okay, now we will see questions asked in GATE. Okay, on this topic. So earlier I told in 2024 one question asked. This was the question of directional derivative. This is the question of 2024 2-mark question. Okay, so what is asking, consider the function f(x,y,z) equal to x4 plus 2y³ plus z square. The directional derivative of the function at the point -1, 1, -1 along I plus j, means in the direction of I plus j. Okay, so how will you find? So directional derivative of f, okay, at in the direction of a at point -1, 1, -1. So you will do gradient of f multiply with the unit vector in that direction, that is I plus j divided by under root 1 plus 1. This is the unit vector in the I plus j direction. Okay, now what will be the gradient of f? Gradient of f will be
gradient of this scalar quantity, it will be 4x cube, 4x cube and I, okay, 4x cube I plus 6y square j plus 2zk. This will be the gradient of f, this will be the gradient of f, and this is the unit vector I plus j upon under root 2. Now you have to do dot product. Okay, it will be dot product. So I dot I will be 1 and I dot j, I dot k remains 0. Okay, so simply we will write down I dot I will be 1. So this will be 4x cube plus j dot j will be 1. So 6y square upon root 2. Now we have to find this direction derivative at point 1, minus 1, 1, minus 1. So put the value of x and y, x equal to minus 1 and y equal to 1. So you will find 4 into minus 1 ka cube plus 6 1 ka square upon root 2. It will be minus 1 ka cube minus 1. So this will be minus 4 plus 6 upon root 2. This will be 2 upon root 2. Answer will be root 2. Or we can write 1.41. This is the question of this year NAT questions. Okay, so you can solve easily question like this. Okay, similarly questions came in 2022. Similar question came in 2022. Like this. Directional derivative of fxyz 4x square plus 2y square plus z square at the point 1 1 1 in the direction of I minus k. Same questions, just figure is change. क्या किया उसने, जो आपके डिजिट है उसको चेंज कर दिया, बाकी क्वेश्चन सेम है आपका. यू कैन सॉल्व लाइक प्रीवियस क्वेश्चंस. ओके, सो यू आर सीइंग हियर फ्रॉम डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स ईच ईयर, है ना, ईच ईयर क्वेश्चंस केम. नाउ आई टोल्ड यू अर्लियर कि यू शुड हैव basic concept of each topic or fundamental of each topics. So in this year in any other branch a question asked, what was the questions? Find the question was like that, question was like that, find the maximum directional derivative of is scalar function was given. So I am assuming like this, of 4x square plus 2y square plus z square at 1 comma 1 comma 1. This question was asked in some other branch this year. Okay, syllabus of engineering mathematics is similar of common to all branches. Okay, 1 2 commons are topics are different. So if you remember, you have memorized only formulas, so you can't solve this question. Okay, if your fundamental or basic of direction derivatives clear, you can solve this question easily. How? You know, in this question direction is not given. इस क्वेश्चन में क्या है, आपको डायरेक्शन नहीं दी गई है, तो आप डायरेक्शन नहीं दी है तो आप कैसे फाइंड करोगे. अब लेकिन इट इज आस्क्ड maximum directional derivatives. So how will you find maximum directional derivative? Okay, let's see. We know directional derivatives क्या होता है. Directional derivative of f will be gradient of f and a vector, unit vector of a means direction, like this. Okay, now you have to find the maximum directional derivatives. So how you can say in which direction it will be maximum, in which direction directional derivatives will be maximum. So you know dot product a dot b. What is a dot b? ab cos theta, ab cos theta. So when dot product of a and b will be maximum, dot product of a and b, when will it maximum? ये आपका कब maximum होगा? When both a and b are in same direction.
when both A and B are in same direction. When it will be in same direction, then angle will be 0 and cos 0 will be 1. Okay, when these both are in same direction means AB cos 0 and it will be AB. So we can say from here कि if you are doing dot product of two vector, so if both vectors are in same direction, so resultant or answer will be maximum. Okay, if if these two vectors are in some angle, so value of this dot product will decrease. Okay, so same concept we will apply here. We are doing dot product of this gradient f. Gradient f is vector quantity and a vector, this is the unit vector of a. Okay, so in which direction it will be maximum? ये कब maximum होगा? It will be maximum in the direction of gradient f when this will be in the direction of gradient f. तो जब gradient f की डायरेक्शन में ही ये क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा. That's why direction is not given in this question. That's why direction is not given in this question, because we know in the direction of gradient it will be maximum. Okay, so we can find maximum directional derivative of f maximum will be in the direction of gradient. So gradient of f multiplied by gradient of f by the unit vector, it will be unit vector. So we will gradient of f, okay, and it will be when you will do dot product of these two vectors, okay, a dot a, and direction is same, so it will be a b cos theta and cos theta will be 1, so it will be a b. A b means magnitude of a into magnitude of b, like this. Like we can write like this: gradient of f gradient of f upon magnitude of gradient of f. Okay, so 1 will cancel out, so what will remain? Magnitude of delta f. It will be the maximum directional derivative because it is in the direction of gradient. Okay, so अगर आपको देखो बताया था, आपको अगर बेसिक नॉलेज है, कॉन्सेप्ट की फंडामेंटल नॉलेज है, तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए. अदरवाइज अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होता है, डायरेक्शन डेरिवेटिव आपने फॉर्मूला पढ़ लिया, तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते. दैट्स व्हाई आई हैव सेड कि इन रिसेंटली ईयर्स क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम द कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स रादर देन द डायरेक्ट फॉर्मूला. ओके, सो नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स, इन अदर सब्जेक्ट्स आल्सो. अगर आप अदर सब्जेक्ट्स भी देखेंगे उसमें भी सेम क्या किया गया है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं. तो इफ यू हैव टू स्कोर above 80 or 90, so your concept should be very clear. Okay, on just only on the basis of formula you can't score 80 or 90 in gate. Okay, so you have to study like this, your fundamental concept part will be strong. Okay, and other questions na from these three topics like this in divergence, है ना, in 2020 last year divergence was asked. So this is a very important topic. Which one? Vector calculus. You are seeing line integration, surface integration, that also in vector calculus. Okay, तो ये part आपका बहुत strong होना चाहिए. So like this we will cover all important topics of mathematics so that you can achieve maximum score in this subjects. Okay, I hope you were able to understand very well this topic. So thank you so much guys. Thank you.